Bismillahirrahmanirrahim. This is Salman Akbar and we have video number 8 of chapter number 2. In this topic we will discuss about buses. जी जनाब, बसेस को हमने डिस्कस करना है. कौन सी बसेस? नहीं जनाब, वो वाली बसेस नहीं जो रोडों पर चलती है, बल्कि वो बसेस जिसमें हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर में. जितना भी हमारा डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है या जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बसेस से करते हैं या बसेस से होती हैं. बसेस क्या होती हैं ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा. हमारे पास ये जो वायर्स होती हैं इंटरनली जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये हमारे पास बसेस कहलाती है. Basically, a computer processes and store data as a series of electronic bits. These bits transfer internally within the circuitry of the computer along the electrical channels, and each channel, called a bus, allows the both inside and attached system unit to communicate with each other. एक दूसरे कंपोनेंट्स में जो आपस में कनेक्टेड होती हैं और डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिट्स की शक्ल में, ये हमारे पास बसेस के थ्रू होती है, वायर्स के थ्रू होती है, जो हमारे पास कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में बसेस कहलाती हैं. Buses are used to transfer bits of input devices to memory, from memory to processor, or from processor to memory, and from memory to output. हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मेमोरी में, फिर मेमोरी से प्रोसेसर में, फिर प्रोसेसर से मेमोरी में, और फिर मेमोरी से आउटपुट जो हमारे पास आता है, ये पूरा प्रोसेस बसेस के थ्रू होता है. The size of bus known as a bus width determines the number of bits the computer can transmit at one time. The larger the number of bits handled by the bus, the faster the computer transfer data. The wider the bus, the fewer the number of transfer steps required and the faster the transfer of data. We have different types of buses, which are address bus, control bus, and data bus. First of all, we will discuss about address bus. The address bus is used by the CPU to send the address of the memory location or the input-output port that is to be accessed at the instant. It is an unidirectional bus. The address can be transferred in one direction only, and that is from CPU to required port or location. Basically, एड्रेस बस हमारे पास क्या काम करती है कि हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करती है एड्रेस बस CPU और मेमोरी में. The number of bits in the address bus can determine the amount of memory the CPU can address. For example, modern PCs as many as 36 address lines, which enable them theoretically to access 64 gigabytes of main memory. ठीक है. Next, we have control bus, and a control bus contains various individual lines carrying synchronizing signals that are used to control various peripheral devices connected to the CPU. The common signals that are transferred to the control bus from CPU to devices and vice versa are memory read, memory writes, input output read, input output write. Control bus basically हमारे पास input output devices को connect करते हैं. जितने भी peripheral devices हैं हमारे पास वो connect करती है CPU के साथ, और ये तमाम कंट्रोलिंग हो रही होती है कंट्रोल बस के थ्रू. इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप की बसेस हैं उसमें हमारे पास डेटा बस है. डेटा बस इज़ यूज टू कैरी द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम CPU टू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड वाइस वर्सा. दस इट इज़ अ bidirectional bus. It is one of the most important part of the connection to the CPU because every program instruction and every byte of data must travel across the bus at the same point. डेटा बस के नाम से हमारे पास क्लियर हो जाता है कि डेटा बस का काम क्या है कि वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन CPU से मेमोरी तक लेके जाता है, और बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस में भी ये तमाम जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो रहा था वो हमारे पास डेटा बस के थ्रू हो रहा होता है. ये हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं बसेस के हवाले से. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. स्टे होम, स्टे सेफ.